Now, so as yesterday we were discussing over here that how we can calculate the buoyant force or the upthrust. So with that, as I said, that two questions I got from the students, that what is the reason of upthrust, यानी upthrust क्यों होता है, इसका रीजन जानना था, और साथ ही साथ ये भी जानना था कि ये एक्सप्लेनेशन जो है, ये कैलकुलेशन जो है, उसको एक बार फिर से करना था. So let's understand about the reason for the upthrust and the mathematical calculation or the mathematical proving of the buoyant force. Okay. So what is the upthrust? Upthrust होता क्या चीज है? जैसे कि कल ही हम बता चुके थे कि upthrust means that a force which acts in the upward direction. Okay, if the force is acting perpendicularly in the upward direction, then that is called to be as upthrust. Now what causes this upthrust? यहाँ पे upthrust की cause condition क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है. तो देखो, इसको इस तरह से समझ में आ सकता है कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, there is any kind of solid object and it has been submerged in the liquid, so it will displace some of the liquid over there, some of the liquid particles it will displace over there to make space for itself. वो अपने लिए जगह बनाने के लिए वो वहां पर पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करेगा. ठीक है, तो जब वो वहां पर अपने लिए जगह बनाया, अपने पार्टिकल्स को वहां पर डिस्प्लेस किया, तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होती है चारों तरफ से, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, from the right side and from the left side, as well as from the back and the forward. ठीक है, तो हर तरफ से उसको फोर्स एक्सपीरियंस होती है. So what actually happens over here? When the force been experienced by the body from all the direction, then we have to understand that, one minute, that when this object has been submerged in the liquid, then the force which is acting from the front side and from the back side, that is equal in magnitude, वो वहां पे बराबर amount में होती है. In the same way, the force which is exerted from this corner and this corner, that is also equal in magnitude, वो भी equal होता है magnitude के कारण. Because of that, we say that it's a balanced force, वो वहां पे balance हो जाता है. But the force which is acting from the top and the force which is acting from the bottom, they are different from each other. At the very beginning, इस चीज को समझने की जरूरत है. जब हम लोग किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं किसी फ्लूइड के अंदर, तो ऊपर से लगने वाला जो फोर्स होता है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, और जो नीचे से लगने वाला फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आती है. ओके, so the difference which is present over there, it makes as unbalanced force. Once again, I'm repeating, the force which is acting from all its surrounding is balanced. वो हर तरफ से वो balanced होता है, left, right, front, backward, वो balanced force होता है. Because of that, there is no resultant action. But the force which is acting from the upper portion and the force which is acting from the bottom portion, they are different from each other. And because of this, there is a resultant action. And this resultant action is greater in the upward direction. ये जो resultant action होता है, ये ऊपर की तरफ ज्यादा active होता है. And because of this only, we experience an upthrust. क्योंकि हम लोगों ने अनबैलेंस फोर्स पढ़ा हुआ है. अनबैलेंस फोर्स में हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट एक्शन जो है वो होती है टुवर्ड्स द ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. तो अगर हम लोग देखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पे नीचे से एज फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ऊपर से सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो व्हिच फोर्स विल बी ग्रेटर ओवर देयर? ऑब्वियस थिंग इज दैट 20 Newton will be greater, and because of that, the action will be in the upward direction, and this upward directional action creates or causes that force, and we name that force as the upthrust. So this is the condition of the upthrust, or this is the cause of the upthrust.
जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो वो अपने सराउंडिंग से इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जिसके कारण उसको हम लोग नेग्लिजिबल लेते हैं, उसकी एक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन ऊपर से और नीचे से जो लगने वाला फोर्स होता है वो डिफरेंट होता है। इसी के कारण हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रिजल्टेंट एक्शन का, और रिजल्टेंट एक्शन जो होती है वो हमेशा ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में होती है। और इस समय ग्रेटर फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड परपेंडिकुलरली एक्शन ऑफ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बी कॉल्ड टू बी एज अपथ्रस्ट। सो वी नेम इट एज अपथ्रस्ट, इसीलिए हम लोग उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। सो दिस इज द काउज ऑफ द अपथ्रस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर। तो Yes? ऊपर से कम और नीचे से ज्यादा क्यों लगता है? अच्छा, इट्स ठीक है। बिकॉज ऑफ द डेप्थ Yes, ऑफ द लिक्विड। yes, it's सर because due लिक्विड to the it is, yes, obviously it is due to the depth of the liquid. As we see at the upper level, we have a little bit of water molecules. Only a fewer molecules of water is there. Because of that, the pressure is acting in a smaller amount. But as we go at the bottom, we observe that the pressure is more over there. And we know this thing that as the depth increases, pressure also increases. Is it okay? यस सर। Got it? Okay. Now let's understand for the calculation of this upthrust. तो इस upthrust का हम लोग calculation भी करके देख लेते हैं कि कैसे इसका हम लोग calculation कर सकते हैं. So see students, yesterday also I was discussing about the same thing. Let me show you that that figure also once again. Just a minute, I will share that page. Okay. So this was the page, and here we were calculating about this thing. Okay. The same calculation I'm going to do with another object so that it will be a little bit easy for you all to understand. Okay, so let's see and do the calculation. Say as for example, we are talking about this object and the pressure is acting, which is over there. So say that from the top, it is acting a pressure P1, and from the bottom, there is an action of pressure P2. Okay. So when we need to go for the calculation, जब हम लोग यहाँ पे calculation करते हैं तो pressure का calculation होता है force upon area. Over here also it is force upon area. Now if we go for the further calculation, जब हम लोग यहाँ पे इसकी calculation करेंगे, यहाँ पर कितना force apply हो रहा है और यहाँ पर कितना force apply हो रहा है. So say as this is, I name it as F1, and this one as I name it as F2. So F1, for F1, I can say it is P1 into A1. And for F2, I can say it as it is P2 into A2. Is there any problem till here? Simple calculation, simple cross multiply only I had done. बस simple cross multiply करके हम यहाँ पे इसका calculation कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स. अभी अभी हम बताए हैं कि जो अपथ्रस्ट है वो ऊपर की तरफ लगती है, तो लार्जर फोर्स है वहां पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, वो जिसको कि रिजल्टेंट फोर्स भी कहेंगे. सो ओवर हियर इफ आई से द अपथ्रस्ट इज द रिजल्टेंट फोर्स, सो रिजल्टेंट फोर्स इज F2 minus F1. तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये F2 minus F1 हो जाएगा. तो यहां पर अगर हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो वी कैन राइट इट एज P2 A2 minus P1 A1. ठीक है, यहां पर ये आ गया. अब देखो दोनों ही साइड में जो लगने वाला जो 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 एरिया है वो तो सेम है. ठीक है, दोनों ही साइड में लगने वाला एरिया सेम है, ऊपर में भी सेम है, नीचे में भी सेम है, दोनों साइड में एरिया सेम है. सो आई कैन टेक दिस एरिया एज कॉमन. हम उस एरिया को कॉमन निकाल लिए, एंड ओवर हियर इट इज P2 minus P1. So when I will go for further solution, A into, यहां पर प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है. So what is the difference of the pressure यहाँ पर? तो ये प्रेशर किससे लग रही है? लिक्विड प्रेशर. And liquid pressure we know about it. So what is the liquid pressure? It is H rho G. Okay.
So we will write it as h rho g minus h rho g. So हम यहाँ पे देखो कैपिटल H और स्मॉल लेटर h जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं अलग अलग पोर्शन के लिए. For P1 I am writing small letter h and for P2 I am writing the big letter h. ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग प्रेशर लगती है. Now if I will just go for this calculation, then again the density is same, so I can take out the density and the acceleration due to gravity. I will take the same, and over here h minus h I will take. Over here when I will do my solution, what will be this value? ये जो h minus h है, ये क्या दिखा रही है? It is showing the height of the object. It is showing the height of the object. ये object का height दिखा रही है. So I can write a into h into rho into g. And what is the calculation of area into height? Area into height shows volume. We know this thing from maths. So volume into density into g. So over here v rho g, where v denotes the volume of the object which has been submerged in the liquid. v जो है वो volume of the object है जो कि submerge किया जा रहा है liquid के अंदर. Rho is the density of the object which has been submerged in the liquid, and g is the acceleration due to gravity which is going to remain constant throughout the earth. हम लोग के धरती पे तो वो तो हर जगह पे कांस्टेंट ही रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाली. So we had understood this thing in our previous column, that the two factors which affects the upthrust, that is the volume of the object and the density of the object. So these two things which we are using over here, यहाँ पर हम लोग जो use कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पर एक बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर हम लोग ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ले रहे हैं, फिर लिक्विड का भी डेंसिटी ले रहे हैं. How that is possible over there? So see students, over here when we are doing the calculation, then under this calculation we are talking about the density of the object which has been made in such a way, or which has been taken in such a way that which can be compared with water. ठीक है, जिसको कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पानी के साथ. सो रिलेटिव डेंसिटी की भी एक रिलेशन यहाँ पर आ जाएगी, जिसको फर्दर तुम लोग समझोगे आगे. फिलहाल के लिए तुम लोग यहाँ पर उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वाटर की डेंसिटी ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ले रहे हैं. हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना buoyant फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा. तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया जाता है लिक्विड के अंदर, तो वो एक सर्टेन अमाउंट की लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, and the amount of liquid which has been displaced, that would be the equal amount of the upthrust experienced by the body, and that is equals to this particular formula. So are you all getting this thing? Have you all understood this? Yes, sir. Yes, or still some doubt is there? If any other doubt is there, then you can say. सर ये रिजल्टेंट फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है, वो समझ नहीं आ रहा है. रिजल्टेंट फोर्स, ओके चलो ठीक है, फिर से बताते हैं. देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ये एक फ्लोर है. ठीक है, सपोज मान लो एक सरफेस है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है. ठीक है, इस तरह की एक ऑब्जेक्ट वहां पे रखी हुई है. नाउ यू आर एक्सर्टिंग some amount of force from this side and someone else is exerting a force from this side. So say as for example, इधर से तुमने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इस साइड से 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है. So we can observe this thing. Say as for example, this is person A and this is person B. So the force applied by person A is greater than the force applied by person B. So what we will observe that there is an unbalanced force. यहाँ पर एक unbalanced force आ गया है, and due to that what will happen, this 20 Newton of force will make this object shift to this side. ये जो होगा वो इधर से इसको shift करेगा. क्यों shift करेगा? क्योंकि out of 20 Newton of force
the 15 Newton of force has been used to overcome this force. इस फोर्स को ओवरकम में कम करने के लिए वो 15 न्यूटन का फोर्स खर्च कर दिया, तो वहां पर उसके पास एक रेस्ट 5 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स है. So this extra 5 Newton force will be the resultant force which will be acting towards this direction, and it will make the object move towards this side, and that is the resultant force. Okay, is it clear? Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Anything else? Anyone? Anything else? Is there any other doubt till here? Otherwise, I will keep today's class till here only, and we will discuss some other topics in the next class. Yes. Yes, Prikti, you are saying something? Sir, apparent weight of any floating body is 0. Okay. It depends on the situation. It depends on the situation, that what is the situation we are talking about. Such as, for example, हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सबमर्ज करते हैं, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू वन इमेज इफ आई वुड हैव इट. One minute, I was explaining buoyant force and this. Okay, over here, if you see, not with this one, but some other images, I am going to explain about all these things. As you all are asking for the apparent weight, I have one image related to that one. I'm just looking for it, where it is, because I was using that one to explain something. Okay, I don't think it is over here, but it must be somewhere. Okay, whatever. Let's understand with this one, with this image. Okay, see, जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट का मास, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का वेट जब हम लोगों ने एयर में मेजर किया, it was there as 0.67 Newton. When we had submerged it into water, we found that the reading on the scale is 0.40 Newton. So earlier it was 0.67 Newton. It was 67 Newton. And later on, we found it got to 0.40 Newton. So it has been reduced. So by how much it has been reduced? It's been reduced by 27 Newton, 0.2727 Newton. So this is the reduction or the reduced amount of the force, because the liquid is exerting a force over here. So in this case, this is our apparent weight. This is our apparent weight. So it haven't got to zero. वो एकदम zero तो नहीं बन गया है. Even though there was a force which was acting from the liquid, and how much force it was acting, that was 0.27 Newton. But suppose that instead of this 0.27 Newton, the liquid has been applied 0.67 Newton force in the upward direction, then what would be the result? Under that situation, our result will be 0. So over here, that would be 0. Then we can say that the apparent weight is 0. It is not necessary that always our apparent weight will be 0. ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों की apparent weight जो है वो हमेशा 0 हो जाए. लेकिन हाँ, apparent weight ये जरूर होगी कि apparent weight will be always less than the actual weight. Actual weight, sorry, ये apparent weight है, ठीक है. ये apparent weight अगर हम लोग लेते हैं तो apparent weight हमेशा कम होगी. Apparent weight हमेशा कम होगा actual weight से. But it is not like this that the apparent weight will be 0 always. It is not possible for all the situation or at every situation. Okay. So in the book it's written that when a body floats at a position, the buoyant force and the weight is equal. Yes, at any position. yes, that we will understand.
as I said, condition, depending on the condition. Say as for example, if I will go for this particular situation over here, you see, when I will explain about flotation, then I will explain. I had already made all these notes for you all. Previously also my videos are there. So you can see for these conditions. Here I had written for this particular condition only. If the upthrust is equals to the weight of the object, then what is the resultant force? That is 0 Newton. So we will say that the apparent weight is 0. So under this situation, we will observe that the object is going to partially sink and partially float over there. So under that situation, we can consider this particular situation. Okay, and there is a situation when we observe that the upthrust is greater than to the weight of the object also. Under that situation, we will observe that the object is floating like this, a proper floating situation. In this situation also it will float, but it will not float completely. In this situation, it will partially float and partially sink. But under this situation, it will completely float over there, or in a proper situation, it will float over there. Okay. Are you getting Yes, this sir. thing? Okay, we will discuss about these things. Slowly we will go. I'm not going all the things all together. Okay. Is it clear till here? So, okay. So we I'm then keeping today's class till here only, and we will meet again in the next class. So most probably our next class, it would be tomorrow only. And in that one, I will discuss some more things. Okay. So till that time, please revise till here. And further things we will discuss in the next class. So thank you for now. Bye everyone. Good night.